हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सी नूडल स्ट्रैप ड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप अपने लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लें और फिर अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग निशान लगा लें। पहले हमें बेसिक मेजरमेंट्स का निशान लगाना है, उसके बाद उसमें जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद हमें शोल्डर्स की चौड़ाई कम करनी है और नेक का निशान लगाना है। शोल्डर्स की चौड़ाई हम 2 इंचेस कम करेंगे। ये हमने इसलिए कम किया है ताकि हमारी स्ट्रैप कंधों से ना गिरे। आर्म होल को हमें हाफ में डिवाइड करना है, विच इज़ 3 इंचेस। अब यहीं से हमें आर्म होल और नेक का निशान लगाना है, कुछ इस तरीके से। सेम वे में आपको बैक पीस की भी कटिंग करनी है। यहाँ हमारे शोल्डर्स 3 इंचेस ऊपर से कट गए हैं, तो हमारी स्ट्रैप 6 इंचेस की बनेगी। सेम वे में आपको बैक पीस की कटिंग करनी है और मेन फैब्रिक को भी कट करना है। बैक पीस में मैंने नेक की लेंथ को कम करा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में स्ट्रैप अटैच करेंगे। अपनी कन्वीनियंस के लिए आप पहले मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 डोरी ली है और सेंटर में एक नॉट बनाई है। ये हमारी एक सिंगल स्ट्रैप बन जाएगी। अब डोरी को डबल फोल्ड करें और 3 इंचेस प्लस 2 इंचेस का निशान लगाएं। सेम वे में आपको दोनों डोरी बनानी है। पहले मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को सिल लिया है ताकि वो खिसके ना। इसके बाद हम डोरी को अटैच करेंगे। यहाँ मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है नेक में फिनिशिंग लाने के लिए। इसकी शेप हमें सेम रखनी है बैक और फ्रंट पीस के जैसी।
छोटे छोटे कट्स लगाएं और फैब्रिक को सीधा पलट लें। फिनिशिंग के लिए एक टॉप स्टिच लगाएं। देखिए हमारा बैग भी रेडी है। अब हम दोनों पीसेस को फ्रंट पार्ट मतलब सीधे साइड को फेस करते हुए रखेंगे और इस तरीके से डोरी को सिल लेंगे। अब आप फिटिंग के निशान लगाने के बाद या उससे पहले भी कुर्ती का घेर अटैच कर सकते हैं और बस हमारी कुर्ती रेडी है। Thank you for watching and don't forget to like and subscribe for more videos.